यू आर लिविंग इन यूके एंड काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि यूके रेसिस्ट है। तो आपको क्या डिफरेंस लगा कि इंडिया में रेसिज्म ज़्यादा था या यूके में रेसिज्म ज़्यादा है? इट्स वेरी लाइक ऑनेस्ट कि हाँ रेसिज्म तो बहुत हाई होता है, पिक हाई होता है, एंड आई फील लाइक इन दिस जनरेशन अभी और ज़्यादा हुआ है। बट देन मुझे बहुत सारे नर्सिंग स्टूडेंट्स का मैसेजेस आते हैं, लाइक बोलती दीदी लाइक आई वांट टू बी लाइक यू, मैं आपकी तरह बनना चाहती हूँ, मुझे भी ऐसा हैप्पी लाइफ चाहिए। सो अभी जो लाइक इंस्टाग्राम में मेरा जो हैप्पी लाइफ देख रहे हैं, द जर्नी वाज लाइक बहुत सारे स्वीट भी है, बिटर भी है। मैंने बहुत चीज़ें सीखा, लाइक आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मैंने वो लाइक आई लॉट ऑफ new things, new experiences, but like somewhere I always felt that कि कोई ना कोई स्टाफ हैंड ओवर के टाइम में मतलब क्या आपको जाने नहीं देगा, क्योंकि जो 12 घंटे का ड्यूटी के बाद भी आप एंड आई नोटिस दैट समवेयर इट वाज अफेक्टिंग माय पर्सनल लाइफ एज वेल, बिकॉज मैं बहुत आई वाज इट वाज इम्पैक्टिंग, एंड इट्स वेरी ट्रू दैट आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है आपका पर्सनल लाइफ में। और अभी आप कैथ लैब में काम करते हो, तो आपका यानी हाउ यू बिकेम कैथ लैब नर्स, what was like your journey to become a cath lab nurse? How is progression opportunities in cath lab? I think the progression in the cath lab is really good because क्या यूके गर्ल्स के लिए सेफ है, या यानी आपको क्या लगता है क्योंकि आप गर्ल है, आपने इंडिया में भी अलग अलग स्टेट्स में काम किया, तो आपको क्या कंपैरिजन में कैसा लगा? आपको इंडिया सेफ लग रहा था या यूके सेफ लग रहा है? यानी आप क्या बोलोगे सेफ्टी के बारे में, क्या बोलोगे? they are like really proud, they are really happy हमेशा, especially my papa now, both like he is very grateful because he knows that like how much I have struggled. So every time he बोलते हैं बेटा जो तुमने इतना 12 घंटे का ड्यूटी तुमने किया है, अब जाके तुमको you are getting fruit of your hard work, so they are like really happy. स्वागत दोस्तों आपका आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है और आप कुछ एक नए व्यक्ति को जानने वाले हैं। होपफुली मुझे लगता है कि आपने उन्हें पहले ही देखा है, क्योंकि रिसेंटली उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया था डेवन ट्रस्ट के साथ, जो कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी हेल्पफुल था जो लोग अभी यूके आना चाहते हैं उनके लिए। और आपके सामने मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ अलीशा को, जो अलीशा सेज बॉन्जोर करके चैनल चलाते हैं और उसमें भी काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो स्प्रेड करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उनके जर्नी को देखने वाले हैं कि इंडिया से यूके उनका जर्नी कैसे रहा, और यूके में भी उन्होंने यानी कैसा उनका ट्रांजिशन रहा, वो सारी चीज़ें देखने वाले हैं। और अलीशा कैथ लैब में काम करते हैं, तो उसके बारे में भी हम थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं। तो अगर आप इन सब टॉपिक्स में इंटरेस्टेड है तो आखिरी तक इस वीडियो को देखना, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो थैंक यू सो मच अलीशा, आपने अपना समय निकाला और इस वीडियो के लिए रेडी रहे। और कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? Firstly, thank you, Madhu, for giving me this opportunity and sharing your platform with me. And it's really nice to have a collaborations video with you as well. And hi, people. My name is Alicia. Agar aap mere ko nahi jante, then I am working as a restaurant nurse, band 5 in the UK. And it's been almost an year. It has been 1 year approx jab main India se UK aayi hu. And right now I'm working in cath lab department. And I hope this video you'll all like it and enjoy what we talk about in this video. यस, डेफिनेटली काफ़ी सारे लोगों को बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगेगा, क्योंकि आपने यानी मैंने देखा है काफ़ी सारे लोग यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, बट इट इज़ लाइक जस्ट जो हम सब लोग वीडियो शेयर कर रहे हैं उसी का यानी पैराफ्रेज्ड वीडियोस होते हैं। बट द वीडियो विच आई हैव सीन यस्टरडे विथ डेवन ट्रस्ट, वो मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा। और जो क्वेश्चंस आपने रेस किए वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लोगों को हुए हैं। और मैंने कमेंट्स भी देखा कि आपको यानी काफ़ी एप्रिशिएट कर रहे थे लोग, जो क्वेश्चंस आपने पूछे उन लोगों के उसके लिए। और डेवन ट्रस्ट भी मेरे ख्याल से आप डेवन ट्रस्ट में ही हैं, और which is also very good thing. तो can you please give us little bit background about yourself कि आपने इंडिया से नर्सिंग किया है, कौन सा नर्सिंग किया है, जीएनएम किया है या बीएससी किया है? आपके एक्सपीरियंस के बारे में भी, इंडिया के जो एक्सपीरियंस आपका था उसके बारे में भी थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन क्या आप दे सकते हैं? Yes, surely. So मैंने इंडिया में बीएससी नर्सिंग कोर्स कंप्लीट किया है, एंड बेसिकली आई एम फ्रॉम दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल में, बिकॉज lot of the people they ask me like दीदी आप कहाँ से हो आप इंडियन लगते नहीं हो पर आप हिंदी में कैसे बोल लेते हो, so I want to tell you that I'm from the Gorkhali community in like from Darjeeling. So मैं दार्जिलिंग से रेस्ट अप हुई हूँ, बट देन फॉर फर्दर एजुकेशन मैंने नर्सिंग के लिए आई हैड टू ट्रैवल टू बैंगलोर। सो मैंने बैंगलोर से ही बीएससी नर्सिंग कंप्लीट किया था नारायण रुदालय कॉलेज से, एंड आफ्टर स्टडिंग देयर फॉर 4 years मैंने वहीं कॉलेज में मुझे प्लेसमेंट मिला था नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियक साइंसेज। सो मैंने आफ्टर आई फिनिश्ड माय नर्सिंग कोर्स मैंने एज अ स्टाफ नर्स CTVS ICU में मैंने मेरा एक्सपीरियंस स्टार्ट किया था, एंड राइट आफ्टर वर्किंग
I moved to Delhi. So Delhi में मैं Fortis Hospital में मैं काम कर रही थी, and in Fortis also I was working in ICU. So जब मैं इंडिया में ICU में already मैं काम कर रही थी as a staff nurse, simultaneously मैं अपना IELTS का CBT का सब UK का जो processing होता है मैंने start किया, and within this 2 years मैंने I was able to secure a job in the UK with Devon Trust, and so like yes, 2023 में I landed in the UK. That's वेरी गुड। आपने काफी अच्छा जर्नी आपका रहा। और आपने मेरे ख्याल से जैसा आपने बोले कि यू आर लाइक अभी 1 साल कंप्लीट होने वाला है, बट वेरी गुड, आपने काफी अच्छा प्रोग्रेस किया है, बिकॉज आई हैव सीन यू हैव गॉट गुड सब्सक्राइबर्स एज वेल। और जो पिछला कल का वीडियो है वो भी अच्छा चल रहा है, तो यू विल गेट मोर सब्सक्राइबर्स। और yeah, but you are doing very good job, because I had started video with the same motive to help people, and I'm doing from my first day till until now. I'm trying to help as much as people I can. So you're doing the same thing. So one thing I want to ask you, don't like feel bad. आप जैसा कल मैंने आपका वीडियो देखा, मुझे भी लगा कि आप इंडिया से नहीं हो, यानी फर्स्ट स्टार्ट करते समय मुझे लगा कि आप शायद फिलीपीन से हो। But yeah, you're doing good job. But I think when you studied in Bangalore and you worked in Delhi as well in Fortis Hospital, which and like Narayan and Fortis, they are like one of the best hospitals in India. So and but where you lived, like in Karnataka and Delhi, like people are not very helpful, I think. So did you feel like racism in India? yes, all of my life ये तो like it's very like honest कि हाँ racism तो बहुत high होता है, peaked high होता है, and I feel like in this generation अभी और ज़्यादा हुआ है, but then it comes to people who aren't educated enough and they do not have much ideas about the world. Well, that's kind of understanding, you know. I don't take offense in everything. I'm very understanding. तो मैं वो offensive statement नहीं लेती हूँ. Maybe it is because of the curiosity, right? So I'll share you मेरा नर्सिंग जर्नी पे जब हम like I studied in Bangalore side, तो जो Yeah. नारायण कॉलेज है वो little bit it's not in posh Bangalore, it's in the rural side. So and people they mostly speak in Tamil and Kannada में बात करते हैं, right? तो उनको इतना ज़्यादा exposures नहीं है जो like community में जब हम जाते थे पोस्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा like गाँव में जाने होते थे. So they were like quite shocked and curious हो जाते थे. Yes. And that's understanding for me. It's because उनको knowledge. But when it comes to the people in the posh cities who has access to all the information, though, like when it comes to like from such people, like I do like feel offended. But then yeah, maybe now I'm just like used to it. Like I just try. क्योंकि yeah, don't feel bad. I have asked this question to you. मुझे हो रहा है कि नहीं सामने वाला जो इंसान है वो जानबूझ के रेसिस्ट कर रहा है. I just ignore them. Yeah. So don't feel bad for that, because I asked this question because it came to my mind, because you are living in UK and काफी सारे लोग बोलते हैं कि UK रेसिस्ट है। तो आपको क्या डिफरेंस लगा कि इंडिया में रेसिज्म ज्यादा था या यूके में रेसिज्म ज्यादा है? आई नो दैट ये जो मैं ट्रूथ बोलने वाली हूँ थोड़ा सा हमारे इंडियन ऑडियंस के लिए थोड़ा सा डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाए, बट देन नो लाइक मुझे रेसिज्म इंडिया पे ज्यादा फेस हुआ है. एंड टू बी ऑनेस्ट 1 year का span हो चुका है. I have not faced any kind of racism. I'm like the comments like they do ask out of curiosity कि आप like because for the people who are not from India, right, the European countries के लिए basic stereotype knowledge Indians का brown skin होता है, brown skin, black hair, that's the basic types, right? So when they see someone having Mongolian features and I'm marriages, so they assume that I am from another country, for say that Philippines, China, any of it, but unko kabhi hit nahi kare that I'm from India, which is fine. And I just educate them about the northeast states of India. I tell them like India is known for its diversity. This is the reason. So I like no, जब मैं educate करती हूँ उनको वो लोग ध्यान से सुनते हैं and they're like oh अच्छा. So they try to process whatever I teach them. So their comment and their questions were not out of racism. It is out of the curiosity. Like कैसे हो सकता है? So far I have not faced like any kind of racism in the UK, whereas in India, जबकि मैं खुद इंडिया से हूँ, and people like the basic knowledge that we are taught in like during our geography classes as well, right? The seven sisters, 8 sisters हो गए हैं, right? 7 sisters and one north state. So जब Indians को already knowledge है, फिर भी they are like quite ignorant being in the same country. So I would be offended when people from other countries who aren't even aware of our culture and
द थिंग्स इन आवर लाइक जियोग्राफिकल लोकेशंस के बारे में पता नहीं होता, तो मैं ऑफेंसिव नहीं लेती हूँ। एंड सो फार लाइक आई हैव ऑलवेज फील वेरी मच इंक्लूडेड। लाइक रिसेंटली हमारा एनएचएस प्रोग्राम भी हुआ था, एंड दे वर लाइक ऑल द कल्चर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड वर सेलिब्रेटेड। सो सो फार मेरा कोई ऐसा बिटर एक्सपीरियंसेस नहीं हुए हैं यूके में, बट इंडिया में To be, बहुत। yeah, to be honest, like I feel like UK is better than like in India in comparison for like when we are talking about racism and classism. उसके बारे में जब हम देखते हैं तो इंडिया से बहुत बेहतर है यूके। यहाँ पे आपको मैंने आज तक मैंने भी यानी मुझे ऑलमोस्ट अभी 3 इयर्स होने वाला है, लेकिन मैंने कभी रेसिज्म का यानी फील नहीं किया। लाइक वो लोग आपको कभी अपसेट नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ योर कलर। Okay, yeah, so this is very good thing here, but if you will see back home, it's not like this. It's like बहुत ज्यादा हम लोग बहुत रेसिस्ट है, ये मैंने देखा है। I'm so sorry to interrupt. I feel like अभी racism बहुत casual हुआ है अभी, and I feel like the upcoming generations, like they feel like kind of like it's a very cool thing just to point out on others, like Yeah. the background caste, colors, and everything, which I should feel like it should not be encouraged at all. हमको strongly Yeah. stand लेना है इस सब चीजों में। Yeah, स्पेशली ऑन सोशल मीडिया लोग यानी बहुत मजा उड़ाते हैं एक दूसरे की यानी इसके ऊपर, विच इज नॉट वेरी गुड थिंग। जो कि यानी सब ने इसके ऊपर स्टैंड लेना चाहिए। हम लोग यानी इंडियंस है, हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना है ना। और या दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, मेरे हिसाब से तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और आप प्लीज कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अबाउट योर नर्सिंग बैकग्राउंड इन इंडिया, लाइक वहाँ पे आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा नर्सिंग में इंडिया के? Okay, so like let's make this very honest. Like अभी जो मेरा like all जो मुझे बहुत सारे नर्सिंग स्टूडेंट्स का मैसेजेस आते हैं, like बोलते दीदी like I want to be like you, मैं आपकी तरह बनना चाहती हूँ, मुझे भी ऐसा हैप्पी लाइफ चाहिए। So अभी जो like इंस्टाग्राम में मेरा जो हैप्पी लाइफ देख रहा है, even my journey started from a scratch. So even मैंने Yeah. as तब मैंने पास आउट किया था, so during my nursing period as well मैंने भी like same other people, GNM हो या BSc nursing, we all know that nursing is a very tough course really। हमको mentally emotionally बहुत strong होना पड़ता है, because our course is so demanding, right? हमको internship भी balance करना होता है, हमारा जो academics होता है, case studies, ये भी बहुत hectic होता है। So even I went through the same process, and yes, when I moved to southern part of India, तो मुझे बस I like by the time I just knew how to speak in Hindi, Nepali, and a bit of Bengali। जब वहाँ पे गया, and I have to go and interact with the local people out there, right, to survive, because I was in Bangalore for 5 years। तो मुझे वहाँ के लैंग्वेजेस सीखना, कन्नड़ा, तमिल, मलयालम, मतलब बहुत डिफिकल्ट, चैलेंजिंग लगा। स्पेशली जब हमको केस स्टडीज करना होता था, कम्युनिटी में जाके हमको हेल्थ एजुकेशन देना होता था। इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट जर्नी एज वेल, बट होपफुली लाइक by the grace of God मेरा जो 4 years भी हुआ, मैंने अच्छे मार्क्स से मैंने पास हुआ, and after that when I got a out them, that's when the real journey started as a staff nurse out there। The journey was like बहुत सारे स्वीट भी है, बिटर भी है। मैंने बहुत चीजें सीखा, लाइक आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मैंने वो लाइक आई लॉट ऑफ न्यू थिंग्स, न्यू एक्सपीरियंसेस, बट लाइक समवेयर आई ऑलवेज फेल्ट दैट कि नर्सेस को इतना ज्यादा वैल्यू एंड रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, एंड दैट आई रियलाइज आफ्टर क्वाइट वाइल, जब मैंने नर्सिंग कोर्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुकी थी। आई फेल लाइक वी वर लाइक वेरी मच अंडर अप्रिशिएटेड। थोड़ा सा कुछ मिस्टेक्स हो जाए, इट यूज्ड टू बी अ वेरी बिग हाईलाइट, एंड आई फील लाइक जो फ्रेशर्स होता है, एज अ फ्रेशर मैंने ये बहुत रियलाइज किया कि that हमको support नहीं मिलता है, even from the like I'm not gonna involve the other professions, let's talk about the nursing itself। So I felt like I did not receive that amount of appreciations and support which I should be getting from my own team, right? अपने Yeah. nurse से वो unity नहीं था। I don't know what is the reason, but there was not like no unity, but there was like one senior जो मेरा like I am very अभी तक भी, even he's working in Manchester right now, his name is also I still remember him because उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। That's how it happens, right? उन्होंने मुझे कितना साल पहले मुझे हेल्प किया था, मुझे सपोर्ट किया था, and I remember him till now because I'm so grateful। Yes. सपोर्ट बिल्कुल नहीं होता था। आई फील लाइक फ्रेशर्स लोगों को दे यूज्ड टू गेट जज। अब लाइक थोड़ा सा छोटी भी चीज की गलती हो जाए, दे वुड बी लाइक इतना काम भी नहीं आता, ये क्या किया, ये क्या किया। एंड आई लाइक हाउ कैन यू एक्सपेक्ट द फ्रेशर्स टू ऑलरेडी हैव द नॉलेज, राइट? तो आई फील लाइक हमको इंडिया पे इन नर्सिंग एज वेल हमको सपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बी काइंड टू योर फ्रेशर्स, बी काइंड टू द जूनियर्स, बिकॉज दे आर द future of the nursing in your country। So
बहुत सारे ऐसे bitter experiences भी हुआ है along with other doctors as well. So where for me, like I'm always like if you know, if you have seen my video as well, I'm a very opinionated person. मैं बहुत voice out करती हूँ. I believe जो दैट्स हम गुड। 4 साल हमने nursing किया है, we do have some knowledge and we are always with our patients and we know like we can be the voice of all patients. And I was that kind of a nurse, like when कोई decisions हो रहा था, I would like to be the active part, you know, जब मेरे यस। patient रहा है कि पेशेंट डिस्चार्ज होना है या फिर इसको स्टेप डाउन करना है, आई वांटेड टू बी द पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग एज वेल बिकॉज आई हैव बीन लुकिंग आफ्टर माय पेशेंट फॉर 12 hours and what his vitals are. But when my like opinions and when my decisions were not at all considered the dur ki baat, when it was not even like appreciated that me talking in between of the conversation, I used to feel that मैंने किया तो क्यों किया. सारा साल पढ़ाई करके एग्जाम्स करके ये करके एंड व्हेन यू आर नॉट इवन ट्रीटेड as someone important to make a decision for the patient whom you are looking for, it was really demotivating for me, to be honest. या ये चीज़ है इंडिया में कि नर्सेस को यानी नहीं मिलता है चांस कुछ पेशेंट के लिए लाइक एडवोकेट करने के लिए, राइट? बट यहाँ पे जब आप आते हो तो व्हेन लाइक दे आर डिस्चार्जिंग देयर विल बी मीटिंग, आई थिंक, राइट? कि आपकी मीटिंग होगी और आपको पूछेंगे कि क्या व्हाट विल बी हिज फर्दर प्लान्स एंड एवरीथिंग. So nurses are involved in each and every step of patient care, which is very good thing. और those who are watching this video, I want to give a message that आप लोगों को हमारी लाइफ देख के ऐसा लगता होगा कि we are very happy now, but इसके पीछे हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, जो सबको करना ही होता है. एक स्टेज होती है जहाँ पे आपको स्ट्रगल करना होता है, पर once you pass that stage, you will like see that it was all worth to like having struggles in our life. So अगर आप अभी स्ट्रगल कर रहे हो, इसका मतलब यह है कि आपका फ्यूचर भी ब्राइट होने वाला है और स्ट्रगल्स हमेशा के लिए नहीं रहेंगे. इट इज लाइक टेम्पररी थिंग. ओके, सो आपको स्ट्रगल भूल जाना है. ओके, सो आपने अभी अपना इंडियन एक्सपीरियंस बताया कि आपने क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया, तो यहाँ पे आने के बाद आपको कैसे यानी कैसा एक्सपीरियंस रहा? अभी तो like there is no like not even a comparison, you know, like अभी जो मेरा like nursing life है, I'm not telling it's 10 out of 10, but then at least I'm satisfied, you know. Back in my country जब कि like every day whenever डिपार्टमेंट जाने से पहले ये होता था, ओके आज कोई ना कोई डॉक्टर चिल्लाएगा या कोई सीनियर झगड़ा करेगा, अभी कोई ना कोई स्टाफ हैंड ओवर के टाइम में मतलब आपको जाने नहीं देगा, क्योंकि जो 12 घंटे का ड्यूटी के बाद भी आप like after night shift also used to be there like 9:30 बजे 10 बजे आ देते हैं, जबकि आपका ड्यूटी 8 बजे खत्म होना था. So वो टेंशन Yeah. हमें and I noticed that somewhere it was affecting my personal life as well because मैं बहुत it was impacting, and it's very true that आपका जो profession life है आपका personal life में impact करता है. Exactly. मतलब वो वैसा बिल्कुल नहीं होता है. I'm like when I wake up and I know like I have to go for shift, I have a very positive mindset and कोई पेशेंट्स का डिसीजन मेकिंग होता है, आई एम हर्ड, आई फील सीन, आई फील अप्रिशिएटेड एंड आई फील हर्ड. हाँ, मुझे कोई सुन रहा है एंड व्हाट आई एम सेइंग इट रियली मैटर्स. सो उसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस बहुत डेवलप हुआ है. एंड और जो मेरे कलीग्स भी है बहुत सपोर्टिव है, एंड इवन माय लाइन मैनेजर जो है ही इज रियली अप्रिशिएटिव एंड बहुत ही इज वेरी लाइक इतना लाइक बैकअप करके रखते हैं अपने नर्सिंग टीम का. लाइक आई वाज लाइक ये मेरे लिए एक आई ओपनर था. इट वाज सो शॉकिंग ट्रांजिशन वेयर हमको बैक इन माय प्लेस जब हम छोटी सी गलती कर दे तो एक्सप्लेनेशन लेटर लिखो. डॉक्टर से ज्यादा था हमारे नर्सिंग इंचार्ज, हमको ज्यादा पहले राइट. बट आउटर इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट. अगर कोई मिस्टेक्स हो गया, कोई प्रॉब्लम हुआ, वी लुक एट द सॉल्यूशंस. वी डोंट बी लाइक तुमने ये प्रॉब्लम की क्यों किया, व्हाई डिड यू डू दिस. नो, आपको सेपरेट professional manner, in a very civil approach. There is nobody who would talk to you in a very high pitched voice. आपको बहुत respectfully जो प्रॉब्लम हुआ है आपके साथ डिस्कस होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं. सो आई फील दिस इज अ वेरी मेजर चेंज out Yeah, here. this is the right way to deal with all the problems, I think. It is Yeah. not कि भाई आपका प्रॉब्लम है तो लाइक यू हैव टू फाइंड गो टू द रूट ऑफ द प्रॉब्लम. पहले फाइंड आउट करना है कि प्रॉब्लम क्या था एंड देन यू हैव टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. यानी कि अगर झगड़ा डॉक्टर और नर्स के बीच में हो रहा है तो फॉल्ट नर्स का ही होगा, ऐसा नहीं होता है हमेशा. देयर कैन बी लाइक बोथ पार्टीज इन्वॉल्व. ओके, सो यानी यहाँ के जो अप्रोच है वो रिसर्च बेस्ड है, एविडेंस बेस्ड है, तो उसी चीज़ों को ये लोग फॉलो करते हैं एंड विच इज़ वेरी गुड थिंग.
आज मैं लाइव आया था यूट्यूब पे, तो वहाँ पे कुछ गर्ल्स यानी फीमेल नर्सेस हमारी है जो कमेंट कर रहे थे। वो पूछ रहे थे कि क्या यूके गर्ल्स के लिए सेफ है, या यानी आपको क्या लगता है, क्योंकि आप गर्ल है, आपने इंडिया में भी अलग अलग स्टेट्स में काम किया, तो आपको क्या कंपैरिजन में कैसा लगा? आपको इंडिया सेफ लग रहा था या यूके सेफ लग रहा है? यानी आप क्या बोलोगे, सेफ्टी के बारे में क्या बोलोगे? I feel the major thing about safety is like it lies on your hand as well. आपको as a mature person, as a mature woman, you should be able to differentiate कि कौन सा एरिया कौन सा क्या जो सराउंडिंग्स क्या आपके लिए क्या सेफ होगा. एंड सेकेंडली आई फील लाइक इधर पे लाइक आई सेड 1 ईयर हो चुके हैं, मुझे कभी भी ऐसा ईव टीजिंग या फिर कोई मुझे रास्ते में जा रहे हो या फिर कोई स्ट्रेंजर पीपल अप्रोचिंग मी, ऐसा मैंने कोई ऐसा फेस नहीं किया है. वेराज बट मैंने कुछ वीडियोस देखा था लंदन में जहाँ पे थोड़ा सा थिफ एंड रॉबरी होता रहता है. सो आई फील लाइक आप जहाँ पर भी जाओ देखे जाए तो अभी न्यूज़ जो हेडलाइंस है हमारा अपना कंट्री भी सेफ नहीं है. आई हैव वॉक्ड इन दिल्ली, तो वी ऑल नो कि उनका न्यूज़ हेडलाइन कैसे होता है. बट देन लाइक आई सेड सेफ्टी आपके हैंड में भी बहुत होता है. आप जस्ट इफ यू जस्ट थिंक दैट इट इज अनसेफ, तो आप अगर आप स्टेप अप नहीं करोगे, आपके कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ जाओगे, देन you'll never be able to work on your dreams. आप जो चाहते हो वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा. सो मैं कोई मेरा कोई फैमिली मेंबर्स नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, तो मैंने भी आई टुक अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिसीजंस टू कम हियर. डर सबके मन में लगता है, बट देन जस्ट आप थोड़ा सा रिसर्च करो. आप जो जो लोकेशन पे जा रहे हो, जस्ट हैव अ रिसर्च अच्छे से एंड जस्ट ट्राई टू फॉर्म मोर इंफॉर्मेशन एंड जस्ट try to stay safe and just avoid going places which have already like जो already पहले से ही bad name में है. just avoid going to that places. That would what I would suggest rather than you staying back in your country just thinking that UK is not safe. क्योंकि बहुत सारी a huge population but everybody is doing well, right? Yeah. So, Yeah, I think what I've seen, I think UK is very safe for girls because मैंने खुद देखा, मैं कार्डिफ में रहता हूँ, इट इज कैपिटल ऑफ वेल्स, और यहाँ पे रात को 12-1 बजे भी आई हैव सीन गर्ल्स रोमिंग अराउंड सिटीज, सो कोई भी यानी दिक्कत उन लोगों को नहीं है. यू सेड यू डोंट हैव फैमिली, कैन आई आस्क अबाउट योर फैमिली एज वेल, और मेरे मम्मी पापा है दोनों दार्जिलिंग पे. माई सिस्टर शी इज अ फ्लाइट अटेंडेंट, तो दीदी अभी दिल्ली में है. सो ऑल माई ओके, फैमिली परिवार जो सब भी है वो इंडिया पे है एंड जस्ट बी आउट इन द यूके. so how they are like they are proud of you, like whatever you have achieved in your life? They are like really proud. They are really happy. हमेशा, especially my papa now, both like he is very grateful because he knows that like how much I have struggled. So every time यही बोलते हैं, बेटा जो तुमने इतना 12-12 घंटे का ड्यूटी तुमने किया है, अब जाके तुमको you are getting fruit of your hard work. So they are like really happy. So you are proud daughter now? Yeah. Yes, very good. You have made your parents proud, so yeah, that's very good thing. और अभी आप कैथ लैब में काम करते हो, तो आपका यानी how you became cath lab nurse? What was like your journey to become a cath lab nurse? ओके, सो जब मेरा डिवॉन्स अलायंस ने मेरा मीटिंग रखा था, इंटरव्यूज रखा था, सो उधर लाइक मुझे बताया नहीं गया था कि वेदर मैं कैथ लैब पे जा रही हूँ. बट देन व्हेन आई लाइक ऑलरेडी मेरे को असाइंड हुआ था एलोटिक कार्डियक कैथेटर सुite एज नोन एज कैथ लैब करके. तो देन आई आस्क्ड माय मैनेजर लाइक कि मुझे बिकॉज मेरा पास एक्सपीरियंस कैथ लैब का नहीं था. सो आई आस्क्ड माय मैनेजर कि मुझे क्यों सेलेक्ट किया गया है. सो देन ही टोल्ड मी दिस मेरा पास का CTVS ICU का experience था and cath lab में vacancy था, so that's why they allotted me out here. So that's how I was able to come to this cath lab. And talking about cath lab out here, like बहुत different है इधर पे. I'm like the procedures and all जो even though same है, but जो nurses का role है, it is entirely different out here. Yes, I think this is like specialist field जहाँ पे आपको यानी स्पेशलिस्ट ही नर्स माना जाएगा. और आई थिंक हाउ इज प्रोग्रेशन अपॉर्चुनिटीज इन कैथ लैब? I think the progression in the cath lab is really good because it's a specialty, right? So आप जितना ज़्यादा आप competitive होते जाते हो and आपका band level बहुत जल्दी increase हो जाता है. Because my even he was like here just for 3 years and now he's band 7 already. And Good. others like who were in some other department but then they came to cath lab and within a very short span of time फिर से band 5 से band 6 हो गए हैं. So I feel क्योंकि इधर पे जो competencies level होता है, अगर if you are able to achieve that skill, you are able to elevate your band level. तो आपके साथ कार्डियोफिजियोलॉजिस्ट, रेडियोग्राफर्स जो सारे टीम मेंबर्स होते हैं वो लोग सब बैंड 6 होते हैं.
एंड हम्म, इवन us as well, like अभी आइडिया फॉर्म हो रहा है कि जो भी नर्सेस हो कैथ लैब पे, once they attend all the competency level, उनको directly band 6 करना ही है, because जब और दूसरे टीम मेंबर्स बैंड 6 है, then why not the nurses when they are doing the same work? So अभी यस, इस पे बहुत ज्यादा फोकस चल रहा है डिस्कशन, so दिस we इज are वेरी गुड। एक्चुअली मैंने यानी जब स्टार्ट किया था यूट्यूब चैनल, तब से मेरे साथ एक सब्सक्राइबर जुड़े हैं। लाइक आपको पता है, जब आप नए नए यूट्यूबर रहते हैं तो आप बहुत कनेक्ट हो जाते हैं अपने सब्सक्राइबर के साथ, और आप उनको नाम से जानते हो, लाइक कि हाँ इसका मैसेज आया था। तो वो मेरे सब्सक्राइबर थे, और मैं आने के 1-2 महीने के बाद ही वो यहाँ पे आए यूके में। Mhm. और शी जॉइंड इन कैथ लैब। स्टार्टिंग में आपको बताया, कैथ लैब में काम करने की वजह से यू डोंट गेट वीकेंड्स, यू डोंट गेट नाइट्स, तो उसके कारण आपको उतना सैलरी नहीं मिलता जितना आपको वार्ड में मिलता है। बट within 1.5 years she got band 6 job. Now she is very happy, so maybe अगर वो इस वीडियो को देख रहा है तो she will know who is she, किसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो या तो कैथ लैब का मैंने देखा है कि यानी गुड अपॉर्चुनिटीज, अगर कैथ लैब हो या कोई भी डिपार्टमेंट में हो, if you have skills and if you have that guts, you can definitely progress yourself. So I think that's good opportunity. So yeah, this is all I think I have covered. So do you have anything to say about, to our like subscriber who want to move to the UK and who have like who are afraid of taking decision in their life? What will be your like suggestion to those viewers? I want to tell that आपको जब unless you do not come out of your comfort zone, it's never gonna be easy. जो major decisions लेना होता है वो आपको ही लेना होता है. And I also want to tell like, क्योंकि मेरे को भी बहुत सारे messages आते रहते हैं Instagram पे and YouTube में कमेंट सेक्शंस में भी, whoever feel that कि यूके आने के लिए आपको एडवांस इंग्लिश चाहिए होता है, या फिर आपको बड़े शहर से होना होता है, बड़े कॉलेजेस से होना होता है, ऐसा कोई कुछ है ही नहीं. until unless you have the potential and आपके पास वो skills है, you are always welcome after. तो आप खुद को अंडर एस्टिमेट मत करो, अंडर कॉन्फिडेंट मत रहो. एंड ऑल द नर्सिंग स्टूडेंट एज वेल, प्लीज आपका जो टाइम है आप प्रॉपर रिसर्च पे स्पेंड करिए, आपका नॉलेज अपग्रेड करिए, बिकॉज रिमेंबर नॉलेज इज पावर. अगर आपके पास नॉलेज है, लोग ऑटोमेटिकली आपको रिस्पेक्ट करेंगे. तो जब आप एज अ स्टाफ नर्स आप ट्रांजिशन करोगे स्टूडेंट टू अ स्टाफ नर्स, प्लीज आप लोग बहुत पंक्चुअल हो जाए, टाइडी होके, एंड आपको बहुत नॉलेजेबल होके आपको खुद को एज अ नर्स प्रेजेंट करिए. एंड if you have any doubts, me, Madhu, we are always there to help. पर जो छोटी छोटी चीजें होते हैं आपको जो गूगल में भी मिल सकती है, आप प्लीज रिसर्च करो. आप लोग सारे क्वेश्चंस पूछते हो कि ओईटी का फीस कितना है, आईएलटीएस का फीस कितना है, आपको गूगल में मिल जाएगा. प्लीज इतना ज्यादा रिलाई मत हो जाए. we may not be able to Yes. reply to each and every comment, because बहुत सारे कमेंट हो जाते हैं, मिस हो जाता है, हमको भी गिल्टी फील होता है. बट देन सिंस इट इज योर ड्रीम, आप थोड़ा और रिसर्च करिए. बट देन जो इन डेप्थ इंफॉर्मेशन होता है जो आपको चाहिए, वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प. हम लोग हमेशा आपका रिप्लाईज करेंगे. सो एंड ऑल द Thank you, बेस्ट. Alisha. थैंक यू, आपने बहुत अच्छी चीज बोले, क्योंकि मेरे पास अभी कम से कम 400 मैसेजेस आए हैं इंस्टाग्राम पे, जिसको मैं रिप्लाई नहीं कर सक रहा, क्योंकि अगर मेरे को मैसेज करना है तो मैं ऐसा ही नहीं हाय हेलो करके मैसेज नहीं छोड़ूंगा। मेरे को यानी मेरा ऐसा है कि मैं उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देके ही यानी उनको रिलीव करूंगा। सो जो लोग भी वेट करते हैं उन लोगों को सॉरी, बट जैसा कि आपने बोले, छोटी छोटी चीजें यू कैन गूगल इट। ओके, आईएलटीएस की, ओईटी की फीस आप गूगल पे सर्च करोगे, आपके पास आ जाएगा। आप उसके लिए मैसेज करते हो, फिर यानी फ्रस्ट्रेट होते हो आपको अगर रिप्लाई नहीं आया, तो इट इज नॉट गुड थिंग, क्योंकि हम भी यानी काफी सारी चीजों में बिजी होते हैं। इंटरप्ट यू कि मुझे मतलब कोई कोई किसी के लाइक दे हैव यूज लाइक लॉट ऑफ लाइक वेरी रूड लैंग्वेज एज वेल, क्योंकि मैंने Yeah. उनका ट्राई नहीं किया है. बट लाइक ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट हम हमारा फुल टाइम जॉब, हम भी हॉस्पिटल में काम कर रहे Yes. हैं, फुल टाइम यूट्यूबर की, हम हमेशा ऑनलाइन हो. एंड लाइक आई सेड कि जैसे कि आपको पता है मधु जी का भी बहुत ऑडियंस बढ़ा है. एंड मेरा इंस्टाग्राम में भी मेरा थोड़ा सा 10K से ज्यादा Yes. ही, तो Good बहुत है। सारा होता है. इट्स नॉट दैट कि हम आपका रिप्लाई नहीं करना चाहते, जस्ट दैट कभी कभी पॉसिबल नहीं होता है, बिकॉज मधु जी का चैनल बस मधु जी ऑपरेट कर रही है, मेरा चैनल खुद में कर रही है, हमारे पास कोई टीम नहीं टीम है. नहीं है या प्लीज डू नॉट लाइक टेक इट इन अदरवाइज दैट हम आपका रिप्लाई नहीं करना चाहते हैं. राइट. या थैंक यू अलीशा, आपके साथ यानी बात करके काफी अच्छा लगा। और आपने यानी जिस तरीके से मैं अपने ऑडियंस को इन्फॉर्मेशन देता हूँ, मतलब ऑन द पॉइंट इन्फॉर्मेशन रहता है, उसी तरीके से आप भी ऑन द पॉइंट होते हो, जितना यानी इन्फॉर्मेशन की जरूरत है उतना ही बताते हो। और काफी जेन्युइन कंटेंट आपके चैनल पे है, आई हैव सीन, एंड ऑन इंस्टाग्राम एज वेल आई हैव सीन दैट यू आर गिविंग लाइक you are creating very good content. So yes guys, those who don't know Alisha,
please go and follow her on Instagram and subscribe her on YouTube as well. I am 100% sure that most of the people, they already know you, but if you have seen her first time, then please show your love and support to Alicia. एंड होपफुली अलीशा वी विल मेक मोर वीडियोस लाइक यहाँ पे अब फिर से हम एक कोलैबोरेशन करेंगे. तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो. एंड अगर आपको जो भी डाउट्स है आप अलीशा से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे भी कर सकते हैं, लेकिन तभी मैसेज कीजिए जब आपके पास बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो. गॉड ब्लेस यू. बाय. थैंक यू सो मच. थैंक यू. बाय.